Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shivjyoti Educational Group. Today, we will take the revision class of chapter number 8. So, class, chapter number 8, Electromagnetic Waves. First of all, we will talk about the sources of electromagnetic waves. Consider a charge oscillating with some frequency. An oscillating charge is an example of accelerating charge. Okay, keep one thing in your mind, that an oscillating charge is an example of accelerating charge. Now this oscillation produces an oscillating electric and magnetic field in the space, and the oscillating electric and magnetic field, combinedly called as the electromagnetic waves, propagates through the space. Now the experimental production of electromagnetic waves was done by Hertz's experiment in 1887. Now the next one, the nature of electromagnetic waves. If we talk about the nature of electromagnetic wave, first of all we go through the characteristic of electromagnetic waves. Now in characteristic of electromagnetic waves, we will see the electromagnetic waves propagate in the form of mutually perpendicular. Learn this one, mutually perpendicular. So mutually perpendicular magnetic and electric field. Remember one thing in your mind, okay, जो electromagnetic waves जो होती हैं उसमें magnetic field और electric field दोनों एक दूसरे के mutually perpendicular होने चाहिए. The direction of propagation of wave is perpendicular to the both magnetic and electric field vector. If we talk about the velocity of electromagnetic wave in free space, the formula is C equals to 1 upon mu naught epsilon naught, that is equals to the speed of electromagnetic wave in the material medium. Okay, free space में तो ये वाला formula use करना है, लेकिन अगर medium materialistic है then we will use V equals to 1 upon mu E, that is equals to C upon under root of under root mu R into that is your ER. Okay, so this is the formula for calculating the speed of electromagnetic wave in the material medium. Now students, the ratio of magnitude of electric and magnetic field vector in the free space is constant. Okay, and that constant is equals to the value C, and C is what? This is the speed of light. So C equals to E upon B, where E and B are in the same phase. Now no medium is required for the propagation of the transverse wave. Transverse wave को propagate करने के लिए किसी medium की requirement नहीं होती है. Electromagnetic wave show properties of reflection, because electromagnetic से light वाली सारी properties show होगी, refraction, interference, diffraction and polarization. ये सारी property हमें electromagnetic waves में भी देखने को मिलेगी बच्चों. Now electromagnetic waves has the capability to carry the energy from one place to another. इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एनर्जी को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी कर सके. Now come to the mathematical expression of electromagnetic waves. Now students, see this diagram. Consider a plane electromagnetic waves that traveling along the z direction, and the electric and magnetic field are perpendicular to the direction of the wave motion. यहाँ पे बच्चों this is the electric field wave. Okay, now this is the magnetic field, और इन दोनों के परपेंडिकुलर z डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग द y डायरेक्शन, and that will be Ex equals to E naught sin bracket start kz minus omega t, and By, that is the magnetic field, that is equal to B naught sin bracket start B kz minus omega t. Now here E naught is what? This is the amplitude of the electric field vector, and B naught is the amplitude of magnetic field vector. If we talk about the omega, omega is the angular frequency, and k is related to the wavelength of the wave. The formula of k will be equals to 2 pi upon lambda. You should learn this formula. That is k is what? This is equals to 2 pi upon lambda. Now come to the electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? Electromagnetic waves include the visible light waves, X-rays, gamma rays, radio waves, microwaves, UV rays, infrared rays. Okay, ये सारी rays जो होती हैं बच्चों electromagnetic waves में आती हैं. So the classification is based on roughly on how the waves are produced or detected. ये जो classification है उस पे based होता है कि waves कैसे produce हो रही है या detect कैसे की जाती हैं. First of all, we will talk about the radio waves. Okay, so radio waves are produced by the
accelerated motion of the charge in the conducting wires. ओके जो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज है बच्चों कंडक्टिंग वायर में, उसकी वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है. दे आर यूज्ड इन द रेडियो and the television communication system, and it is generally in the frequency range of 500 kilohertz or about to about 1000 megahertz. Okay, so you should learn this range bachcho. Okay, now come to the microwaves. Now class, come to the microwaves. The microwaves, or it is known as the short wavelength radio waves. बच्चों ये नाम ध्यान रखना, microwaves को हम short wavelength radio waves भी बोलते हैं, with the frequency in the gigahertz range and are produced by the special vacuum tubes that are called as the klystrons, magnetron and gun diode. Okay, due to their short wavelength they are suitable for the radar system. इनकी छोटी wavelength की वजह से इसको हम radar system में भी यूज करते हैं. Used in aircraft navigation. Microwave ovens are domestic application of these waves. तो microwave ovens जो होते हैं उसमें भी हम microwaves का यूज करते हैं. Now the next one, infrared waves. Infrared waves are what? Are produced by the hot bodies and the molecules. Okay, now infrared waves are sometimes referred to as a heat waves. तो बच्चों इनके जो सेकेंडरी नेम्स है, जैसे माइक्रोवेव्स के लिए कहा था दिस इज अ शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड के लिए बोल रहा हूँ दिस इज हीट वेव्स, तो ये नेम्स भी आपको याद होने चाहिए. सो इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन द फिजिकल थेरेपी. Infrared rays are widely used in the remote switches of household electronic system such as TV, video recorders, etc. जो रिमोट्स होते हैं बच्चों उसमें हम इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, इंफ्रारेड रेडिएशन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ्स वार्म्थ और एवरेज टेम्परेचर थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इंफ्रारेड रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विजिबल रेज. ओके, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई. ओके, ह्यूमन आई जिस पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जिस पार्ट को डिटेक्ट करती है वो होती है आपकी विजिबल रेज. तो ये वाला पार्ट है जो हमारी ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज और द वेवलेंथ रेंज ऑफ अबाउट 700 to 400 नैनोमीटर. नाउ कम टू द यूवी रेज जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं. इट कवर्स द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 4 × 10⁻7 मीटर to 6 × 10⁻10 meter, or you can say from 0.6 nanometer to 400 nanometer. Now अगर UV radiation की बात की जाए तो it is produced by the special lamps and very hot bodies. Okay, the sun is an important source of UV light, and UV light in the large quantity has harmful effect on the humans. Exposure to the UV radiation induces the production of the more melamins causing the tanning of the skin. Okay, skin cancer भी इससे हो सकता है. Now UV radiation is absorbed by the ordinary glass, hence one cannot get tan or sunburn through the glass window. Now students, due to its shorter wavelength, okay, UV ray की wavelength बहुत छोटी होती है, so UV radiation can be focused into very narrow beam for the high precision applications such as eye surgery, such as UV lamps are used to kill the germs in water purifier also. So these are the uses of the UV rays. So this is very important, you have to learn the uses of the UV rays. Now students, come to the X-rays. It covers the wavelength from about 10⁻⁻8 meter to 10⁻⁻13 meter, or you can say from the 4 nanometer to 10 nanometer. Or one is a common way to generate the X-ray is to bombard a metal target by high energy electrons. Okay, हम मेटल टारगेट को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करके एक्सरे जनरेट कर सकते हैं. एक्सरे आर यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल्स इन द मेडिसिन एंड एज अ ट्रीटमेंट फॉर द सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर. Now students, come to the gamma rays. They lie in the upper frequency range of electromagnetic wave spectrum and have the wavelength of range about 10⁻⁻10 meter or to less than 10⁻⁻14 meter. Now this is the high frequency radiation. Okay, अगर high frequency radiation wave का नाम पूछा है तो you will say the gamma ray. Okay, is produced in a nuclear reaction and also emitted by the radioactive nuclei.
They are used in the medicine to destroy the cancer cells. Now students, हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, शॉर्ट रे, टेलीविजन, एफएम, एम रेडियो, लॉन्ग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड द सेकेंड थिंग, जो विजिबल रेज हैं उसको भी इन्होंने सब पार्ट किया है, जिसके अंदर आपके वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनकी क्या क्या वेवलेंथ होती है उसको यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया है। सो यू शुड लर्न दिस डायग्राम ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, यहाँ पे उसकी रेंज लिखी हुई है कि वेवलेंथ किस रेंज में होती है, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, वेव्स प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं, इनका डिटेक्शन कैसे हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चों, इनको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 8, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप रिवीजन वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से गो थ्रू करना और इन वीडियोस को बार बार देखना। थैंक यू।